Okay, now today's lecture is going to start with a new topic, and that is centroid, center of gravity, center of mass. See, these are terms that you have heard at some point of time in your physics classes earlier while you were in school. Now, let us understand the concept once again, and let us start with the term center of gravity. Center of gravity, I'm just reading from what I have already written over here. Okay. Center of gravity, it is also written as CG in short. So whenever you want to write center of gravity, you don't have to write this whole phrase. You can simply write CG. This will indicate center of gravity. So CG of a body is a point on the body through which the whole weight of the body acts. This is the definition, and that ends it. Okay. So center of gravity is a point at which you can assume the whole weight of the body to be concentrated. Now there is an interesting experiment regarding this. For example, if I have a non-uniform body of some random shape, no identifiable shape. Okay, this is a random body. Let us give it a three-dimensional effect also, so that it looks like a plate. And now you have been asked to find the center of gravity. How do you do that? I mean, being an engineer or being a student of science, you should be able to accomplish at least very simple experiments like this. And what is the experiment now that is currently under your purview? You have to find the center of gravity of an object which is shaped like the one that I've drawn over here. Center of gravity, once again, let us go back to the definition. It is the point at which the whole weight of the body, weight, please mind it, not mass, weight, at which the entire weight of the body can be considered to be concentrated, or at the point at which the weight of the body can be assumed to be acting as a vector. Now, how do I know with a random shape like this whether the center of gravity will be at this point or at this point or at this point? See, with a regular shaped body, I can be 100% sure. For example, if I draw a thick plate like this, this is a regular rectangular shaped object, right? Now, for this object, I can be 100% sure that the center of gravity will be at the center of the rectangle. And how do I obtain the center of the rectangle? There are two ways. Either I can connect the two diagonals, and I will say that the meeting point of the diagonal is the center of the rectangle, or I can simply go for a much easier way. Take the midpoint of the opposite sides, connect them with a simple straight line. Take the midpoint of the other two opposite sides and then connect it with a straight line. And the meeting point of these two straight lines will become the center of gravity of my rectangular block. So this is easy. The center of gravity can be easily found for objects having identifiable general geometric shapes. Again, draw a circle, and just to give it the shape of a body, let us say this is in the form of a disk. And now again the task is to find the center of gravity. Nobody would have any difficulty in saying that the center of gravity is at the center of the circle. And how do you draw the center of the circle, or how do you identify the center of the circle? Connect any two diameters, and the meeting point of any two diameters would be the center. Okay, and there would lie your center of gravity CG. But the question or the task at hand is not to find the center of gravity of easy objects like rectangles and circles.
You have been given a very complicated shape, and now you have to identify the center of gravity. See, this is how you do it. You don't know where the CG lies. You make a small hole in the object so that you can hang the object from a wall. Now you go to a wall. This is a wall. You put a nail in the wall like this. And then you bring your object and hang it by the nail. Now the gravity will make sure that wherever the center of gravity is, it will fall along the vertical line along which it is resting. So all you have to do is pick up a pencil and a scale and draw a vertical line starting from the nail. And now your object has a vertical line drawn by you using a pencil like this. This vertical line has been drawn by you. Now what you do is make another hole at any other location. Let us say you make a hole here. And now you again go back to your wall and nail and suspend the object by this second hole. So when you suspend your object with the help of the second hole, your body will be suspended like this. Again, since the gravity will force the object to come in alignment in such a way so that the center of gravity must lie along the vertical line. See, please don't forget that your first line is already existing on the body. You have drawn it already. Okay. And now, once you have suspended it from another point, you draw again a vertical line like this. And now your body will have another vertical line which you had drawn like this. And now you get two lines which are intersecting at a point, and this point must be the center of gravity. This is a very simple experiment. By using this experiment, you can find the center of gravity of any object that is being given to you. You can find the center of gravity of a cup. You can find the center of gravity of your laptop. You can find the center of gravity of any item, no matter what the shape is. So center of gravity is a point at which the weight will act. Okay. So this was an interesting experiment. Now you know how to identify or find out the center of gravity of any object. And if somebody asks you what is the center of gravity, it is the point at which the entire weight of the object is acting. In short, if I want to make myself more clear, I can even say something like this. If there is an object of any shape and I have given you the center of gravity and the mass of the object is m, then I can draw a vector like this. And now I have to draw the mg vector like this only. I cannot draw the mg vector randomly anywhere. I cannot say कि चलो इसका weight यहाँ act कर रहा है, let this be mg. This will be wrong. Why? Because this point is not the center of gravity. You have to draw the mg vector from the center of gravity. Okay. So for random objects, we have been taking the value of mg and we have been taking the vector of mg for many problems. But now we have been introduced with the concept of center of gravity. So now you have to draw the mg vector at the center of gravity. Okay. So for random objects, you can identify the point of CG, where it will lie. And now our task is to find the center of gravity of different objects. That is what you are going to learn in this lesson. Okay, before proceeding, let us find out what are the other terms that we need to learn. Centroid. Centroid is a term that is generally used to replace center of gravity. So many people use centroid instead of center of gravity.
But you should very clearly understand that there is a slight distinction between these two terms. Center of gravity and centroid are not always the same. So let us see what a centroid is. It is the point at which the total area of a plane figure like rectangle, square, triangle, quadrilateral, circle, etc. is assumed to be concentrated. Or rather, I will give you a much easier definition for centroid. Centroid can be defined as the geometric center of any entity. So I'm going to redefine centroid for you so that it is easier for you to remember. What is a centroid? It is the geometric center of any entity. See, please remember that I'm using the word entity here. Entity means it could be a line, the entity could be an area, the entity could be a volume. So it could be a three-dimensional figure, it could be a two-dimensional figure, it could be a one-dimensional figure. That is the essence of the word entity here. So if I use the word entity, everything is covered in this. And what is the meaning of geometric center? Let us find out. I draw a line like this. The length of the line is L. So tell me, where is the centroid of this line? It's very easy. Centroid has to be the geometric center of the entity. The entity is a line. The geometric center would exactly lie at a distance of L by 2 from any end. Now, I draw a rectangle like this. Where is the centroid of the rectangle? Once again, centroid of a rectangle is supposed to be the geometric center of the rectangle. Okay. So I can either connect the diagonals or I can connect the midpoints and I will find the centroid. So now some of you might be starting to suspect that this concept looks very similar to the concept of center of gravity. We will come to the difference between center of gravity and centroid. But for now, you can easily say that centroid and center of gravity are almost the same concept. Similarly, for a plane area, let us say a circle, this center of the circle is the centroid. Okay, let us take some three-dimensional quantities now. What will be the centroid of a cube? There is no doubt for you that it will be the volumetric center of the cube, which will lie inside this three-dimensional image. Okay, and again, if you are doubtful of how to find it out, you can easily find out by connecting the internal three-dimensional diagonals. It's a little bit difficult to draw it inside uh, uh, a 3D image on a 2D plane figure like this, but I hope that you can understand this. Okay, let us take a few more examples. I'm pretty much sure that everybody knows what a cylinder is. Cylinder is again a three-dimensional image. Where would the centroid of the cylinder be? Centroid of the cylinder would be once again at the midpoint of the height of the cylinder inside the cylinder. So this is the geometric center of the volume of the cylinder. If somebody asks you what is the centroid of a cone, again a three-dimensional image. So all you have to say is, see, we will learn the proof of this also, don't worry. Start from the center of the base. If h is given as the height of the cone, you climb to a distance of exactly h by 4. This will be the centroid. This is the geometric center of the volume. Okay, if you construct
a uniform density cone like this using some material, you can definitely say with surety that the center of gravity of that solid cone will also lie at a distance of h by 4 from the base center. Or in other words, you can say uh, 3h by 4 from the top. This is also सर possible. Ah, yes. सर ये h/4 ही क्यों है नीचे से? इसका प्रूफ है बेटा, क्योंकि ये कोन देखो ऊपर तो वॉल्यूम कम है ना इसका। हाँ ये देखो इस लाइन से नीचे देखो ये बेस चौड़ा है, इधर ज्यादा मटेरियल फिल्ड है, और इससे ऊपर को कम मटेरियल है, तो ये एग्जैक्ट सेंटर पे तो हो ही नहीं सकता। एग्जैक्ट सेंटर पे तो उसके होगा जिस लाइन के ऊपर और जिस लाइन के नीचे इक्वल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड हो, राइट। कोन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, तो ये सीधे सीधे अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेंट्रॉइड जो है ये इसकी हाइट के सेंटर पे तो नहीं आने वाला, क्योंकि हाइट के सेंटर से ऊपर का वॉल्यूम और नीचे का वॉल्यूम डिफरेंट है। तो इसलिए सेंट्रॉइड जो है ज्यादा वॉल्यूम जहां पर होगा उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। अच्छा। जैसे और सर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही होगा ना? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी यही होगा। अब मैं एसेंशियल डिफरेंस दिखाता हूं कि कौन से केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड अलग हो जाते हैं। आई एम गोइंग टू टीच यू दैट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आई होप। द सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी टिल नाउ हैव सीम्ड टू बी द सेम फॉर ऑल द फिगर्स आई हैव ड्रॉन, but now I am going to draw another image to explain the concept of center of gravity and centroid and the difference between them. Okay, now look at this. I take a cylindrical bucket, it is empty. If somebody asks you, locate the centroid of this cylindrical bucket, you can easily say that the centroid of the cylindrical bucket is somewhere at the center inside the bucket and it is hanging in mid air. भाई खाली बकेट है तो इसका सेंट्रॉइड वॉल्यूम के सेंटर के अंदर आप जब उसको लोकेट करने जाओगे तो वो हवा में मिलेगा आपको ये सेंट्रॉइड। This centroid is not located on the body of the bucket. It is going to be located inside the air at the central location, this location. Okay. Now, as the part of the experiment, what you do is you fill this bucket up to this height with sand, or let us say you fill it with rocks. इसको पत्थर भर दिया आपने इसके अंदर, and from this height to this height you filled it with gravel or very fine sand, and the remaining volume was filled with water. And now somebody asks you, locate the centroid of this volume. You don't have to think about anything else. What is filled inside the bucket? You simply take the geometric center once again and say, this is the centroid. No doubt. So there is no change in the centroid. But if somebody asks you, locate the center of gravity, in that case, there is a problem. Now, the center of gravity and centroid are not the same. Now, please pay attention to the fact that the weight at this part of the bucket is the maximum. The weight in this part of the bucket is medium, and this part of the bucket is filled with water. So this part of the bucket is weighing the lowest. So the weight distribution inside the bucket is completely variable. The bottom part of the bucket is very heavy because it is filled with rocks. The middle part of the bucket is of medium weight because it is filled with sand. And the topmost part
is filled with water, so it has the lowest weight. So it has three layers of weight inside. And now, if you try to locate the center of gravity of this, you will easily see that the center of gravity will shift towards the maximum weight area. So the center of gravity will not be found at the centroid, it will shift downwards by a little distance, and this will become the CG. This is the center of gravity, and this is the centroid. Okay. So now, in a nutshell, if somebody asks you what is the difference between center of gravity and centroid, are they always the same? Then the only answer that you have to give is centroid is the center or the geometric center of the geometry or the entity. So it does not depend on what the weight distribution is, what the mass distribution is. It simply remains where it is. Center of gravity, on the other hand, depends on mass distribution, depends on distribution of weight. So if the weight is unevenly distributed within the body, as was shown in this example, then center of gravity will change and it will deviate from the centroid. How do you make the center of gravity and centroid the same for an object? In order to do that, you have to distribute the weight of the body uniformly at all points of the body. If the weight is uniformly distributed inside the body, in that case, the center of gravity and centroid will come at the same point. Did you understand this concept or not? Please, somebody put on the microphone and tell me. समझ में आ गया? हाँ सर। ओके. जैसे मतलब सर ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो मतलब प्रैक्टिकल है, और वो जो अपन वो बाहर की जो शेप है उसके अकॉर्डिंग होता है सेंट्रॉइड तो केवल? सेंट्रॉइड सिर्फ शेप के अकॉर्डिंग होता है, आपके एंटिटी का शेप क्या है, उसके अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. सेंट्रॉइड हमेशा सेम रहेगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी मास डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है? ओके. इसी चीज को थोड़ा और एम्फसाइज करने के लिए, नाउ इनसाइड द बकेट यू मेक अ पार्टीशन लाइक दिस. आपने एक पार्टीशन बना दिया बकेट के अंदर, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द पार्टीशन यू फिल विथ sand, and the right side of the partition is empty and contains air. So this is air, this is sand. Where will the center of gravity of the cylinder lie now? On the vertical line it will be at the center only, but in the horizontal direction it will shift towards the heavier object. So the center of gravity will slightly shift towards the left side because sand is heavier than air. And if you draw the center of gravity on an empty cylinder, in this case the center of gravity will be found here. But where would the centroid be? The centroid will still remain at the geometric center. So this is how center of gravity shifts with the shifting of weight in one direction or the other. Got it? Yes, sir. Okay. Now let us move on to further concepts. Let us see which is the next concept in line. Center of mass. Center of mass is again a very similar concept. It can be defined as the point at which the total mass of the body is assumed to be concentrated. Center of gravity क्या था? Point at which the total weight of the body was assumed to be concentrated, and center of mass at which the whole mass of the body is assumed to be concentrated. Now, somebody among you might be very eager to jump to the conclusion कि सर अब इसमें क्या फर्क रह गया? सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास तो एक ही हो गए, क्योंकि भाई ग्रेविटी की फोर्स, वेट क्या चीज होती है? व्हाट इज वेट? वेट इज इक्वल टू mg, राइट? तो अगर आपका सेंटर ऑफ मास, मास का सेंटर है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी
वेट का सेंटर है। तो वेट और मास में फर्क क्या होता है? एक स्मॉल जी से मल्टीप्लीकेशन ही तो होता है, और स्मॉल जी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ वेट सेम होने चाहिए। बट अगेन देयर इज अ डिफरेंस। In most of the cases, this argument is correct. That since weight is nothing but the product of mass and the acceleration due to gravity, and since this is a constant quantity, so mg or w and m should have the same point at which concentration is assumed. But again, this assumption falls apart when you consider an example like the one I am going to show you. अब आप एक एग्जाम्पल इसको अज्यूम करके देखो। This is planet Earth. Now I am talking about this is planet Earth. This is our dear satellite Moon. Now assume a condition that a very large asteroid जानते हो ना, उल्का पिंड जिसको कहते हैं, the asteroid is passing through the space between Earth and Moon. So let me take a very big asteroid. Now this asteroid is so big that it is bigger than the Moon but smaller than the Earth. Just assume it for the sake of explanation. हालांकि इसके ऊपर अपन खूब चर्चा कर सकते हैं कि ऐसा हो गया तो फिर यहाँ पर तबाही मच जाएगी, या फिर ग्रेविटेशनल पुल के कारण अपने टाइडल वेव्स चढ़ के आ जाएगी. यस, ऑल दोज थिंग्स आर पॉसिबल, बट just assume for the sake of argument that an asteroid or an astral body is located in between Earth and Moon. Now tell me, okay, for the sake of simplicity, let us also assume that the asteroid is also perfectly spherical. इसको भी बिल्कुल perfect sphere ले लेते हैं ताकि और आसानी हो समझने में, ठीक है? Now, since it is a perfect sphere, the centroid will be at the center. There is no doubt this will be the centroid. Okay. And let us say that the mass distribution inside the asteroid is perfectly distributed. यानी कि mass जो है इस asteroid का, इसमें कोई गड्ढे नहीं है, कोई पहाड़ियां नहीं है, ये बिल्कुल एक गोल पिंड है, स्मूथ राउंड स्फीयर. ओके, परफेक्ट स्फीयर. परफेक्ट स्फीयर है. तो अगर ऐसा है तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इसके सेंट्रॉइड पर ही होगा, यस क्योंकि सर. सेंटर ऑफ मास क्या चीज है? इट इज द point at which the complete mass of the body can be assumed to be concentrated. And since the mass is perfectly uniformly distributed, it is a perfect sphere, the center of mass and the centroid will be found at the same location. But now look at the effect of gravity. अर्थ की साइज ज्यादा होने के कारण इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये ज्यादा है. मून का साइज छोटा होने के कारण इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g dash is smaller than your g, and therefore the acceleration pull or the gravitational pull of the earth will be larger as compared to the सर मून. attractive pull of the moon. तो यहां पर जो आपकी फोर्स लगी हुई है, इस पिंड को जो मून जिस फोर्स से खींच रहा है और इस पिंड को अर्थ जिस फोर्स से खींच रहा है, ये दोनों डिफरेंट है. एंड इन दैट केस, if you draw an imaginary vertical line through the asteroid, this part of the asteroid has got more weight vectors compared to this part of the asteroid. कितने weight vectors इधर लगे हुए हैं? तो अब जो है आप एस्ट्रॉइड का अकेला फिगर बनाओगे, you will see that the weight density on the left side is much more compared to the weight density on the right side. देखो, मास की बात नहीं कर रहा, मास तो दोनों तरफ बिल्कुल बराबर है, लेकिन वेट क्या चीज होती है? मास इंटू जी होता है कि नहीं होता है? अब जी जो है अर्थ का ज्यादा है,
तो यहाँ को जो वेट होंगे, जितने भी एम जी छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेफ्ट साइड को जो खींच रहा होगा वो एम जी से खींच रहा होगा, और लेफ्ट राइट साइड को जो खींच रहा होगा वो एम जी डैश से खींच रहा होगा. So each of this mg is greater than mg dash. So therefore, you can safely and say with full confidence that the center of gravity of this asteroid is somewhere to the left side of the center. ये इसका CG हो जाएगा. Now look at the eventual verdict. Asteroid लिया, इसका जो geometric center था, this is the centroid. Since the mass is uniformly distributed, this is the center of mass also. And since on the left side there is earth and on the right side there is moon, the center of gravity will shift towards the earth. This will be center of gravity. So this is the difference between center of gravity, centroid and center of mass. So in a nutshell, if somebody asks you कि भाई ये बताओ इसमें क्या डिफरेंस है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ मास, तो आप ये अर्थ मून एस्ट्रॉइड की कहानी बताने के लिए नहीं बैठ सकते. You have to give a small sentence like this. What is the difference? I have tried to draw it with an image. ये एक इमेज मिली थी मेरे को किसी किताब में, उधर से मैंने कॉपी किया है. Center of mass and center of gravity will be the same in the presence of a uniform gravitational field. बस इतनी सी बात कह करके खत्म कर दो. In the presence of a non-uniform field, the center of mass and center of gravity will be different. देखा आपने, सेंटर ऑफ मास जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ चेंज नहीं होता, चाहे आप उसको कहीं पे भी ले जाओ, चांद पे ले जाओ, अर्थ पे ले जाओ, इनके बीच में लेके आ जाओ, इट डज नॉट चेंज. बट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंजेस विद द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. तो आपको बस इतना सा याद रखना है, ठीक है. ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया आप लोगों को, जरा बताओ मेरे को. हो गया सर. हो गया सर. ओके. Now let us move on and let us now come to some concepts in which we can use some mathematics and all. ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम करते हैं. ये भी इंटरेस्टिंग ही था सर. ओके. Centroid of some common geometric shapes जो आपको याद रखनी है. I have given a table of centroids of some common shapes. These shapes are a minimum requirement for you to remember by heart. किन किन के हैं? ट्राइंगल का सेंट्रॉइड पता होना चाहिए, सेमी सर्कल का पता होना चाहिए, क्वार्टर सर्कल का पता होना चाहिए और रेक्टेंगल का पता होना चाहिए. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, रेक्टेंगल. अब देखो, now apart from the concept of simply locating the centroid on the body, now we are going to do a more mathematical approach by locating the centroid with respect to an origin. ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे मेरे को. I have a rectangle of side 2 meter, side 4 meter. I have a coordinate axis with me, x and y. This rectangle is placed exactly in such a way so that this side is parallel to x and this side is parallel to y. This is the origin, and the given information is that this corner of the rectangle has the coordinates of, let us say, 2, 3. This point has coordinates 2, 3. Now I hope that the concept of coordinates is very clear to you. Okay, so if this is 2, 3, that automatically means, say this is 2, 3. So that means this is the x coordinate and this is the y coordinate of this point. We are talking about this point.
So that means from the origin, this point is at a distance of 2. And from the origin, this point is at a distance of 3. So 2 and 3 are the x and y distances of the point from the origin. Okay, now what I want you to do is tell me the coordinates of the centroid. 4,4. The centroid will lie 4,4. somewhere around here, and the coordinates of the centroid are always given like this. Now please look at this new notation and learn it. X bar, comma, y bar. This is called as the centroid or center of gravity notation. तो x बार और y बार अब मैं आपको आगे की क्लासेस में कभी भी यूज करके दिखाऊंगा, आप इमीडिएटली समझ जाना कि सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है. Got it? So now as you can see that this centroid will lie exactly 2 meters from this point, and this centroid will lie exactly 1 meter above this point. So the coordinates of this point with respect to origin can be traced by extending it towards the coordinate system like this. So ये point कितना हो गया? This was already 3 plus 1, so this becomes 4. This was already 2 plus 2, this becomes also 4. So the coordinates of the centroid become 4, 4. आप लोगों ने यही बोला था क्या? Yes, sir. Okay. So your answer is x bar comma y bar is equal to 4, 4. This is how you have to write the answer. तो अब से अपन कभी भी सेंट्रॉइड पता करने की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमेशा हमारा आंसर x बार y बार के टर्म्स में होना चाहिए, बिकॉज नाउ सेंट्रॉइड इज नॉट सिंपली पिन पॉइंटिंग द सेंट्रॉइड. आपको फिगर बना करके आरटीयू में ये नहीं बोलेंगे कि इस पे एक डॉट लगा दो सेंट्रॉइड जहां दिखेगा. नो, you have to mathematically find the centroid in the form of x and y coordinates with respect to some given origin. इस origin के respect में आपको find करना पड़ेगा. Okay, so once you have understood this, rectangle का तो clear हो गया. Now let us move on to a little bit more complicated concept, that of a triangle. I have already given this in your notes कि ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कैसे लोकेट करना है, बट लेट मी गिव यू अ मोर इलैबोरेट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस टेक अ राइट एंगल ट्रायंगल. Okay, this is the right angle triangle, and let us say that this is the base and the length of the base is b. This is the height and the length of the height is h. Locate the centroid of this area. See, I have not drawn the origin. We will come back to the concept of origin later on. ठीक है, अभी तो मैं आपसे यही चाहता हूं कि सिर्फ डॉट लगा दो कि कहां पर आपको इसका सेंट्रॉइड मिलेगा. This is very easy to locate. Whenever you see a right angle triangle, all that you have to do is move perpendicularly upwards from the base. ठीक है, कितनी हाइट तक जाना है आपको बेस से ऊपर? क्योंकि आप h की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मूव परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स अप टू h by 3, and once you have reached the height of h by 3, draw a dotted line. Now one thing is sure, that the centroid of this triangle is somewhere on this line. Now we don't know at which point. Now you do another exercise. From the vertical line, you start moving in the perpendicular direction towards the right along the length b, and once you have reached exactly b by 3 distance from the base, you stop and again you draw a line. Now this line and this line will intersect at a point, and this will be the centroid. So in a nutshell, for any triangle, the centroid of the triangle will have to lie at a point
which is at one third the height measured from the base of the triangle. Now it does not matter which base it is. You take any base. अभी इसको बेस बनाओगे तो h/3 हाइट पे मिलेगा, अगर इसको बेस बनाओगे तो b/3 हाइट पे मिलेगा, और इवन इसको बेस बनाओगे तो यहां से जो परपेंडिकुलर हाइट है ट्राइंगल की, इसके 1/3 पर ही मिलेगा आपको यहां से। दिस इज अ प्रूव्ड फैक्ट, और इसको हम लोग इंटीग्रेशन और एनालिटिकल मेथड्स से आगे जाके प्रूव भी करेंगे, बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, सर सो हाँ सर ये इसका बोलो अपन बोलो। ऐसे भी तो निकाल सकते थे, ये सेंट्रोइड की अपन है ना, एक तो परपेंडिकुलर यहाँ से खींच देते और एक है ना मतलब कोई से भी पॉइंट से दो कोई से भी पॉइंट से परपेंडिकुलर खींच देते और फिर जो मीटिंग दो पॉइंट होता पॉइंट है से वो। नहीं बेटा, ये आपने गलत कॉन्सेप्ट बताया, दो पॉइंट से परपेंडिकुलर नहीं खींचे जाते, इनके मीडियन खींचे जाते हैं। दिस इज साइड वन, you find the midpoint of side 1 and connect it to the opposite vertex. You take another side, again you find the midpoint of this side and connect it to the opposite vertex. Now the point at which these two medians meet has to be the centroid. This will be the CG or centroid. ऐसा है, परपेंडिकुलर खींच करके नहीं निकाल सकते, परपेंडिकुलर खींच करके आपको दूसरी चीज मिलती है उसकी। ठीक है, हाँ सर मतलब यही कहना चाह रहा था मैं। हाँ यही कह रहे थे, तो आप सही कह रहे थे। इफ यू आर हाँ टॉकिंग अबाउट द मीडियंस देन यू आर राइट। ठीक है, हाँ सर। एंड drawing the medians of a triangle can become somewhat of a difficulty, so instead you can remember this practice also, ये भी कर सकते हो। So instead of a right angle triangle, if I give you some random triangle, let us say this, and I say that locate the centroid, now what you can do is, first of all, draw the height of the triangle, select this as the base. If this height is h, move to a distance of h/3 and draw a line parallel to the base. And now make this as the new base and draw a parallel line at the vertex and find out what is the perpendicular height of this. And from this base, you move. Now this is the new height h dash. From this base, you move to a height of, let us say, h dash by 3. Draw a line parallel to the base. Now, the meeting point of these two lines, so I will draw a simplified figure now. This was the h/3 line by taking this as base. This was the h/3 line by taking this as the base. Now, wherever these 2 points meet will have to be the centroid. तो ट्राइंगल के लिए ये चीज याद रख लो, 3 साइड होते हैं ट्राइंगल में, तीनों में से किसी को भी बेस बना लो और उसकी हाइट के h/3 डिस्टेंस तक बेस से चालू करके चलो, तो आप सेंट्रॉइड की हाइट पे पहुंच जाओगे। और ऐसा 2 बार किया तो दोनों पॉइंट्स जो इंटरसेक्ट करती है वो सेंट्रॉइड होना ही होना है, दैट विल हैव टू बी द सेंट्रॉइड। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स इट्स वेरी इजी टू लोकेट। जैसे इस वाले में तो आपको कंस्ट्रक्शन खूब सारा करना पड़ा था, देयर इज अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन, so this might prove to be a little bit difficult, but for right angle triangles it's very easy to locate। ये ट्राइंगल बनाया, अगर मैंने आपको यहाँ की डिस्टेंस दे दी, दिस इज 4 मीटर and let us say this is 6 meters and let us say this is the origin। now tell me what is the answer to this question। दिस इज योर क्वेश्चन, बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। दिस इज ओरिजिन, ये पॉइंट ओरिजिन है, दिस इज 90 डिग्री, राइट एंगल ट्राइंगल है, द बेस इज 4 मीटर, द हाइट इज 6 मीटर। व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? लोकेट द सेंट्रॉइड, कहां पर होगा बताओ। गिव मी द आंसर। 4/3 और 2। 4/3, 2। सर 4/3 और 2 में भी। करेक्ट आंसर।
क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ये प्रूव हो गया है इसके आंसर से। ठीक है, आपको करना क्या है, सेंट्रॉइड लोकेट करने के लिए पहले इसको बेस बनाया और यहां से हाइट की 1/3 तक चले। हाइट कितना है 6 मीटर, तो 6 मीटर का 1/3 कितना है 2। ठीक है, अब इसको बेस बनाया और यहां से ऊपर को चले। अब यहाँ पे ये हाइट 4 मीटर है, तो 4 मीटर का 1/3 कितना है 4/3। तो ये लाइन बनाई, तो ये हो गया 4/3, ये हो गया 2, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलो, दिस प्रूव्स दैट यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल्स आल्सो। एंड नाउ let us come to another shape, semicircle। सेमीसर्कल के लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखना है। तो आई विल गिव यू द कॉन्सेप्ट एंड देन आस्क यू सम क्वेश्चन। फॉर अ सेमीसर्कल, सी दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किसी भी ऑब्जेक्ट की अपन जनरली जो एक्सेस बनाते हैं उसमें कई बार आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाती है। इफ यू सी, आई हैव ड्रॉन द वर्टिकल लाइन व्हिच एग्जैक्टली पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सेमीसर्कल। ठीक है, so there is no doubt that the area lying towards the left side of this line is exactly symmetrical to the area lying on the right side। और कभी भी ऐसी axis of symmetry मिल जाए, then you can guarantee one thing, that the geometric center will compulsorily lie along this line। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को आइडेंटिफाई करना आपके लिए प्रॉब्लम्स में बहुत फायदेमंद हो सकता है। जैसे कि मैं एक दूसरा इमेज बनाता हूं, एन एरो हेड, एक एरिया है ये। ठीक है, ये एरिया दे दिया और मैंने बोला कि फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ दिस इज नॉट अ टास्क दैट कैन बी सिंपली accomplished by looking at the figure। इसको देख के आप एकदम से नहीं बता सकते, लेकिन एक चीज आप शर्तिया रूप से बता सकते हो, दिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सो यू कैन क्लेम कि भाई मेरे को ये एग्जैक्ट पॉइंट तो नहीं पता कि इसका सेंट्रॉइड कहां होगा, लेकिन चूंकि इस एक्सिस के अबाउट ये एरिया सिमेट्रिक है, तो ये मैं पक्का कह सकता हूं कि इसका सेंट्रॉइड इस लाइन पर ही कहीं पर मिलेगा, पक्का है। अब ऊपर नीचे कहां मिलेगा ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉट ऑलवेज द वाई एक्सिस, इट कुड बी एनी रैंडम एक्सिस। जैसे कि अब मैं आपको एक दूसरा इमेज देता हूं, अ टिल्टेड सेमी सर्कुलर एरिया लाइक दिस। ये ना तो एक्स एक्सिस पे अलाइंड है ना वाई एक्सिस पे अलाइंड है, कोई बात नहीं, आप इसकी बेस लाइन बनाओ एंड ड्रॉ a perpendicular from this baseline passing through the center। इस baseline के center से एक perpendicular line था। Now this line is the axis of symmetry। This line is such line so that all the area to the left side and all the area to the right side is exactly symmetrical। So now you can claim with 100% surety that I don't know exact location of the centroid, but I can claim one thing with surety, that the centroid must lie somewhere along this line। इस लाइन पे यहाँ 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 कहीं पर है, लेकिन ये तो पक्का है कि इस लाइन से इधर नहीं जाएगा इधर नहीं जाएगा। नो, it will have to be on the line of symmetry। So this is the amount of ease that will come with the establishment of line of symmetry। तो किसी भी फिगर के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री अगर आपने एस्टैब्लिश कर ली तो उसका सेंट्रॉइड लोकेट करना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। बट एनीवे, फॉर अ सेमी सर्कल everybody knows that the line of symmetry is the vertical line like this। ठीक है, and now all you have to remember is कि इस vertical line पे कहां पे हमें इसका सेंट्रॉइड मिलेगा। so now
Let us say that the radius of the semicircle is r. Then the location of the centroid will be at a height of 4r upon 3 pi from the base. This quantity you have to remember. 4r upon 3 pi, 4r upon 3 pi, रट लो, रटना है आपको लिटरली। इसका प्रूफ भी आपको कराएंगे क्लास में, अपने को टाइम मिला तो बहुत सारे प्रूफ्स अपन कर नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द प्रूफ्स आई विल गिव यू द रेफरेंस कि टेक्स्ट बुक में कहां पर है, एंड देन यू विल हैव टू गो एंड रेफर योरसेल्फ, क्योंकि ये सारे प्रूफ अगर अपन क्लास में कराएंगे तो आपका मैकेनिक्स का सिलेबस इट्स टू लार्ज टू कवर एवरीथिंग। So you have to be an active participant yourself by referring some things on your own. तो ये सारी स्टैंडर्ड प्रूफ्स हैं, आपको मिलेगी। बट सर ये प्रूफ तोड़ना है कि तो आरटीयू में बिल्कुल आ सकती है बेटे, 100% आ सकती है इसकी प्रूफ। लेकिन आपको जब मैं मेथड सिखा दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि इसका प्रूव करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। बट यू हैव टू स्टे इन कनेक्शन विद द क्लास, क्लासेस मिस ना करें, साथ में रहें, इसका प्रूफ आपको मुश्किल नहीं लगेगा। वी विल लर्न दैट लेटर ऑन, बट फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि एक सेमी सर्कुलर एरिया का रेडियस अगर गिवन हो तो उसका सेंट्रॉइड उसके बेस से उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर कितनी हाइट पे मिलेगा, 4r अपॉन 3 पाई हाइट पे मिलेगा। Now the concept is exactly same if you take a quarter circle. Semicircle का याद हो गया अपन को। Now let us take a quarter circle. This is a quarter circle. This is the origin. This is the x-axis. This is the y-axis. ठीक है? ये shaded area है quarter circle. Now your task is to find or locate the CG or centroid of the quarter circle, which will lie somewhere around here. Let us say. तो आपको ये पूछा गया है x बार y बार क्या है। It's again the same. इस बेस से 4r अपॉन 3 पाई राइट की तरफ आ जाओ, इस बेस से 4r अपॉन 3 पाई ऊपर की तरफ आ जाओ। So in other words, if this is given as the origin and if you want the centroid, your answer is simply this. 4r upon 3 pi, 4r upon 3 pi, that's it. क्वार्टर सर्कल का भी काम खत्म कर दिया अपन ने। तो अपन ने आज कुछ स्टैंडर्ड शेप्स के याद कर लिए, ट्रायंगल का याद कर लिया, ऑलवेज x बार एंड y बार एट अ डिस्टेंस ऑफ b by 3 h by 3। सेमी सर्कल x बार को 0 क्यों दे रखा है यहाँ पे, ये देखो, क्योंकि इन्होंने ओरिजिन ही ऐसा बनाया है। लुक एट दिस, सेमी सर्कल अगर आपने ऐसा बनाया और इसी को ओरिजिन बना लिया, और अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि गिव द वैल्यू ऑफ x बार कॉमा y बार, तो आपको ये तो पता है कि सेंट्रॉइड जो है वो यहाँ पर है, कितनी ऊंचाई पे, 4r अपॉन 3 पाई की हाइट पर है, दिस वन। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बार, ये तो इसी लाइन पर है ना, तो x बार कितना हुआ, ये ना तो इधर गया ना इधर गया, सो x बार इज 0। If your centroid lies on the y-axis, then x bar is 0. If your centroid lies on the x-axis, then y bar is 0. ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। तो इसका अगर मैं आप इसको ओरिजिन दे दूं, if this is the origin and if you ask me what is the centroid, then x bar comma y bar is simply 0 comma 4r upon 3 pi। चलो अब इसी में मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। This is my coordinate axis. This is the origin. This is a semicircle with radius r. Give me the location of x bar y bar in grid. इस फिगर में r, 4 r by 3 pi. वेरी गुड, परफेक्ट आंसर।
अब की बार देखो x बार 0 नहीं है, तो इसको ऐसे भी नहीं रटना है जैसे कि रट्टू तोते रट लेते हैं कि भाई हमेशा सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड 0,4r/3 पाई। नो, इट विल डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द ओरिजिन विथ रेस्पेक्ट टू योर एरिया। अगर ओरिजिन को यहां पर लाके रख दूं तो x बार 0 हो जाता है। इस केस में तो आपको इंटेलिजेंटली देखना पड़ेगा कि सेंट्रॉइड यहां बन रहा है, तो x बार कितना है, इतना दूरी पर है, तो दिस इज r। और y बार कितना है, इतना दूरी पर है, दिस इज 4r/3 पाई। सो दिस इज हाउ यू हैव टू जज इट। ठीक है, तो आज हमने सारी चीजें सीख ली। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर गोइंग टू टेस्ट योर फर्दर स्किल्स। अगेन आई एम ड्रॉइंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम। I draw a quarter circle here. This is 4 meters. This is r. Give me the value of x bar comma y bar. Anybody know? Open question. Quarter circle है ये. This is r. This is also r. सर 4,4/3 पाई। 4 कॉमा तो नहीं आएगा। x बार का आपने 4 बोला है तो वो गलत है। x बार कितनी दूरी पर है? 4r सर अपॉन 4 नहीं 16r अपॉन पाई 3 पाई। No. 4 + 4r/3 पाई Yes, ये कौन बोल रहा है? 4r/3। 16 प्लस ये 4r कौन बोल अपॉन रहा है? 3 है। 4 plus 4r/3 pi is the value of x bar, कॉमा y बार की वैल्यू कितनी है, 4r/3 पाई। ये है करेक्ट आंसर। ये देखो भाई, क्वार्टर सर्कल का सेंट्रॉइड यहां पर होगा, ये इस बेस से कितना दूर है, दिस डिस्टेंस इज 4r/3 पाई। तो ओरिजिन से कितना दूर हुआ, 4 + 4r/3 पाई। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x बार। अब ओरिजिन से ऊंचा कितना है, वो y बार हो जाएगा आपका। ऊंचा तो 4r/3 पाई ही है, ये वाला पॉइंट। सो दिस इज सिंपली 4r/3 पाई। इस तरह से कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है अपने को। ठीक है, जो अपन फर्दर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपन कंपोजिट फिगर्स के बारे में बात करेंगे। वी विल फाइंड आउट द सेंट्रॉइड्स ऑफ मोर कॉम्प्लिकेटेड शेप्स। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अपन इतना करते हैं। एंड प्लीज डोंट गो अवे, लेट मी कलेक्ट योर अटेंडेंस। देयर आर 48 people present here. Refresh. 47. Download. Okay, I will call out the names, and if your name is not here, please let me know. अजय पाल सिंह, अजय प्रताप, अमन आदित्य, चौधरी संजय, अभिषेक तिवारी, भानु कृष्ण, चेतन, अक्षय सिंह शक्तावत, अंकित यादव, अमनदीप सिंह संधू, देवाक्ष नरवारा, अक्षित कुमार सेन, अमित पारीक, अखिल शर्मा, अतुल जैन, अक्षित शर्मा, अभिषेक कुमार कुशवाहा, आमिर खान, अमन शर्मा। अमन शर्मा 22-23 के बारे में बताइए भाई। 22। 23। यस सर 23। ओके, एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे नोट कर लूं। 22 and 23 हो गए। अभय राज, आदित्य राज, अक्षत शर्मा, आयुष वैष्णव, अक्षत सिंह, अजय कुमार बुरी, अभिषेक पांडे, अमन खान, अमित दुबे, अमित माथुर, अनिरुद्ध जांगिड़, अंकित शर्मा, अनिरुद्ध सिंह शेखावत, अनुज त्रिपाठी, अनुराग दादीच, आशीष कुमार, अश्विन सिंह, अविरल कुमार शर्मा, भानु प्रताप सिंह चौहान, भरत कुमार शर्मा, भास्कर, चैतन्य भूषण, चित्रांश, क्रिस्टी दीपू, दर्शन जैन, दीपक कुमार यादव, दीपक मीना। ओके,
Okay, now please move on to the next lecture. Thank you very much. Thank you, sir.